Dear student, welcome in 9th standard Sanskrit class. This is our fourth chapter, Valabhi Vidya Sthanakam. Valabhi is the name of a place. Okay? Vidya Sthanakam. Vidya Sthanakam means study place. Right? Valabhi, the study place. Right? पढ़ने का स्थान. Okay, you are, dear student, you are well acquainted with the नालंदा विद्यापीठ and वल्लभी विद्यापीठ. वो सब आपको नाम तो पता होगा, राइट? है ना? तो ये वल्लभी विद्या स्थानकम मीन्स वल्लभी विद्यापीठ जो हम बोलते हैं, राइट? उसके बारे में ये चैप्टर है. तो देखो, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. In ancient India, education was widespread and prevalent. Okay, prevalent means also widespread. Okay, पहले के ज़माने में पढ़ाई थी तो उसके बारे में कि in ancient India, education was widespread and prevalent. In ancient Greater India, there were great centers of learning. In many big cities, where scholars from different parts of the world studied. One such center of learning was in Gujarat. Right? क्या है कि ऐसा लर्निंग चलता था. ओके, और मैनी स्कॉलर्स वेर ऑल्सो देयर इन दिस यूनिवर्सिटीज़. ओके, और उसमें एक हमारी गुजरात में भी यूनिवर्सिटी थी. In this lesson, an introduction is given of that center. Mainly, this lesson has been written in such a way that gives an idea of the teaching learning method of such center. Okay, or this lesson is also giving the introduction of this Valabhi Vidya Sthanakam. Right? और उसमें क्या है? This lesson has been written in such a way that gives an idea of the teaching learning method of such center. और कैसे पहले के ज़माने में टीचिंग लर्निंग मेथड थी उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन देता है, राइट? उसके बाद देखो, as the content of this lesson deals with the past, an attempt has been made to teach the uses of the past tense too in the sentence here. The language of this lesson is simple and you can also learn the forms of noun as well as the formation of compound words along with verb forms. ये पैराग्राफ कुछ ज़रूरी नहीं है, खाली इतना याद रखना है कि दिस चैप्टर इज इन पास्ट टेंस, राइट? Now we go to the chapter. Okay, I will speak slowly and you will write it down, dear student. Okay? सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति. तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्वमात्मानं धन्यं मन्यते. राइट डियर स्टूडेंट? क्या है? सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति. सम्प्रति मीन्स एट प्रेजेंट. विविधाः विश्वविद्यालयाः, विविधाः मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ. विश्वविद्यालयाः means the universities. सुप्रसिद्धाः सन्ति. सुप्रसिद्धाः means very famous, right? So what will be the translation? At present, samprati means at present there are many famous universities. At present, there are
many famous universities. तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्वमात्मानं धन्यं मन्यते. तेषु, तेषु means among them. Okay, among them. केचन means some. एतादृशाः सन्ति like this. यत्र where अध्ययनार्थं means for study. प्रवेशं प्राप्य means getting admission. छात्रः student. स्वमात्मानं धन्यं मन्यते. स्वमात्मानं means to himself. धन्यं मन्यते means to be blessed one. Right? तो क्या लिखेंगे उसका ट्रांसलेशन स्टूडेंट? प्लीज राइट डाउन. among them there were such universities where the students believe themselves to be the blessed one, B-L-E-S-S-E-D, blessed one, B-L-E-S-S-E-D, blessed one, by getting admission there. Okay? एवमेव पुराकालेऽपि अस्माकं भारतदेशे एतादृशः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्. एवम् एव in the same way. पुराकाले अपि in the ancient time. अस्माकं भारते देशे in our nation India एतादृशः like this बहवः many विश्वविद्यालयाः means universities, आसन् means were. In the same way, in the ancient time, in our India, there were many universities. There were many universities. Full stop. तत्र विद्याध्ययनाय दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्राः स्वमात्मानं धन्यं मन्यन्ते स्म. तत्र ते विद्याध्ययनाय means for study. दूरात् देशात् means far away countries. समागत्य means came. प्रवेशं लब्ध्वा means by getting admission. छात्राः student. स्वमात्मानं to himself, themselves. धन्यं मन्यन्ते स्म. Believe them to be the blessed one. Right? So what will be their student? In past क्या लिखेंगे? तत्र there the students from the faraway countries
were coming for admission and by getting admission they believed, B-E-L-I-E-V-E-D, they believed themselves to be the blessed one, B-L-E-S-S-E-D, to be the blessed one. एषु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालयः. एषु means among them. एकतमः one. वल्लभी विश्वविद्यालयः, वल्लभी यूनिवर्सिटी. Among them there is one वल्लभी वल्लभी यूनिवर्सिटी. फुल स्टॉप. मगधराज्ये यथा नालन्दा आसीत् तथैव अत्र गुर्जरप्रदेशे वल्लभी आसीत्. राइट. Magadha is the region name, okay, state name, kingdom. And जैसे ये मगध राज्य में नालंदा थी ना, यू हैव हर्ड द नेम नालंदा विश्वविद्यालय, राइट. तो ये नालंदा जो विश्वविद्यालय थी ना, वो मगध राज्य में थी. और ये जो वल्लभी है वो हमारे गुजरात राज्य में है, राइट. तो ये बोल रहे हैं, राइट डाउन. Just as Nalanda is in the kingdom of Magad region, sorry is नहीं लिखना, was लिखना है स्टूडेंट. डियर स्टूडेंट, वंस अगेन इसकी जगह was कर देना. Just as Nalanda was in the kingdom of Magadha region, in the same way Vallabhi was in Gujarat state. अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म. अत्रापि हियर ऑल्सो. सुदूरात् देशात् फार अवे कंट्रीज. जनाः पीपल. अध्ययनाय मीन्स फॉर स्टडी. आगच्छन्ति मीन्स वर कमिंग. हियर ऑल्सो the people from far away countries were coming for study. Were coming for study. अद्यत्वे अस्मदीये गुर्जरप्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदे वल्लभी नामकं यदेकम् उपनगरं वर्तते. तत्रैव प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्. अद्यत्वे मीन्स एट प्रेजेंट. अस्मदीये गुर्जरप्रदेशे, अस्मदीये मीन्स अवर, गुर्जरप्रदेशे मीन्स गुजरात स्टेट. वर्तमाने प्रेजेंट.
Bhavnagar Janapade. Janapade means district. Bhavnagar is the name of a place. Valabhi Namakam means name Valabhi. Yadekam one. Upanagaram Vartate. Upanagaram means town. Tatraiva प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्. There this वल्लभी विश्वविद्यालय was there. राइट तो ये वल्लभी विद्यालय कहाँ थी? हमारे गुजरात स्टेट के भावनगर जो जिला है ना वहाँ ये वल्लभी विश्वविद्यालय थी. राइट तो राइट डाउन. एट प्रेजेंट in Bhavnagar district, of Gujarat state, there is one suburb, SUBURB. There is one suburb named NAMED, named Vallabhi, where the Vallabhi University was there. Where the Vallabhi University was there. In ancient time. Right, dear student? So this is our first paragraph. Now we go to second paragraph. Right? So second paragraph. वस्तुतस्तु इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केन्द्रमासीत्. वस्तुतस्तु means in fact. इदम उपनगरम this suburb. प्राचीन कालादेव means from the past time. अध्ययन अध्यापनस्य केन्द्रम आसीत्. केन्द्र means center for study and teaching. In fact, this suburb, this THIS, this suburb was the center of CENTRE, the center of learning and teaching from the ancient time. From the ancient time. Full stop. पूर्वमत्र अष्टादश विद्यायाः पठनं पाठनं च भवति स्म. इधर 18 विद्या का स्टडी होता था. तो क्या लिखते हैं? पूर्वम पहले, इन पास्ट. अत्र हियर अष्टादश विद्या मीन्स 18. Okay, 18 vidyas. Okay, learning and teaching was there. In past, here there was the learning and teaching. There was the learning and teaching of 18 EIGHTEEN 18 subjects. एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः षट्वेदाङ्गनानि पुराणं न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गन्धर्ववेद अथर्ववेद चत्वारः उपवेदाः च समाविष्टाः सन्ति.
देखो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, यू हैव टू राइट द नेम। देखो हर एक वर्ड लिखोगे ना तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना, बिकॉज दीज आर द नेम्स। ओके, एताशु विद्यासु, एमोंग these subjects, among these THESE subjects plural, there were THERE, there were 4 Vedas, 4 Vedas, वेद का वी कैपिटल, कॉमा, षट वेदांगनानी, 6 वेदांगनानी, कॉमा, पुराण PURAN, पुराण, कॉमा, न्याय NAYAY, न्याय, कॉमा, मीमांसा MIMANSA, कॉमा, स्मृति S कैपिटल SMRUTI, स्मृति, कॉमा, आयुर्वेद AYURVEDA, आयुर्वेद A कैपिटल, धनुर्वेद, कॉमा करके D कैपिटल, DHANURVEDA, धनुर्वेद, कॉमा, गंधर्ववेद, GNDHARVEDA, अर्थवेद, कॉमा, ARTHVEDA, अर्थवेद, कॉमा, चत्वारः उपवेदा, 4 उपवेदस। ओके, फुल स्टॉप। ततः बौद्धदर्शनस्य जैनदर्शनस्य च इदं केंद्रम आसीत्। ओके, पहले ये सब पढ़ाते थे, बाद में ये किसका केंद्र हो गया? एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, Jain and Bauddha, right? Right now. Then THEN. Then it became the center of CNTRE, the center of Jain and Buddhist philosophy. Jain and Buddhist philosophy, full stop। उसमें ही लिखना, ख्रीस्तस्य चतुर्थ्यां शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकारः स्कंदस्वामी संजात। चतुर्थ्यां शताब्द्यां मीन्स इन 4th century, ख्रिस्तात मीन्स ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ऋग्वेद का भाष्यकार मीन्स कॉमेंटेटर, कौन था? स्कंदस्वामी आए। Write down. In the 4th century of Jesus Christ, in the 4th century of Jesus Christ, the commentator of Rigved, स्कंद स्वामी, एस कैपिटल लिखना, स्कंद स्वामी, came there. सह अत्रैव अवसत्, अवसत् means lived, सह means this स्कंद स्वामी, he lived here, एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलति स्म। सूचयति मीन्स शोज, गुप्तकाले, काले मीन्स टाइम, इन द टाइम ऑफ गुप्त, वेदाध्ययन प्रचलति स्म, के वेद का पढ़ना होता था। दिस शोज दैट
In the time of Gupt, G-U-P-T, G capital लिखना. In the time of Gupt, there was the study of Vedas. There was the study of Vedas. ख्रिस्तस्य चतुर्थ्यां शताब्द्याम् एव सुप्रसिद्धौ बौद्धाचार्यौ स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य श्रीमल्लवादी सूरी च अत्रैव विद्याव्यासंगं कुर्वन्ति स्म. राइट. फिर 4th सेंचुरी में कौन आए? बौद्ध आचार्य स्थिरमति और गुणमति और जैनाचार्य मल्लवादी सूरी इधर आए और विद्या व्यासंगम मीन्स स्टडी, उन्होंने इधर स्टडी किया. सो राइट डाउन. इन द 4th century of Christ, the famous Buddhist acharya, the famous बुद्धिस्ट बी कैपिटल लिखना, BUDDHIST, बुद्धिस्ट आचार्य, आचार्य का ए कैपिटल. स्थिरमति एंड गुणमति, स्थिर का एस कैपिटल, गुणमति का जी कैपिटल. स्थिरमति एंड गुणमति एंड द जैन आचार्य, जैन का जे कैपिटल, आचार्य का ए कैपिटल, जैन आचार्य श्री मल्लवादी सूरी, श्री का एस कैपिटल और सूरी का एस कैपिटल, श्री मल्लवादी सूरी स्टडीड ओनली हियर, स्टडीड STUDIED, स्टडीड ओनली हियर. Okay, dear student, so we have done the translation of first 2 paragraphs. The remaining part of the chapter, translation of this chapter will be done in second part. Okay, thank you.